So first we will discuss a little bit of a two-dimensional or three-dimensional system for mainly a Cartesian coordinate system. And then we will go for a spherical polar coordinate system where we will discuss angular momentum algebra, spin, and if time allows, then we will go for hydrogen atom or radial wave function also. Okay, so let's try to go for this. So in two-dimensional and three-dimensional system, you have to just focus on the basic thing because question was asked very simple and very straightforward. And you all know that this concept that whenever you have Vxy, and that will be for the potential is function of x and y, and then you have your wave function psi xy is basically multiplication of a wave function associated to individual degree of freedom, and that will be phi yy, and the total energy is nothing but that will be added by associated to each and every degree of freedom, and nx and ny is the quantum number which is associated to x degree of freedom, and ny is the quantum number which is associated to y degree of freedom. So this is the whole story. So if you have a two-dimensional potential, so two-dimensional particle in box, so suppose I have Vxy is equal to 0, then x will be between 0 to a and y is between 0 to b, then and infinity otherwise, then your energy eigenvalue is nx square upon a square, ny square upon b square, pi square h cut square upon 2m a square, and where nx is equal to 1, 2, 3 independently and ny is equal to 1, 2, 3 independently. And similarly, suppose this box is defined, and what will be your wave function? I am writing this wave function here. For this wave function is basically psi nx ny is equal to root 2 by a sine nx pi x by a root 2 by a sine ny pi y by a, where x is between 0 to a and y is between 0 to b. Now suppose this is your one potential, and if this potential is going to change with some this particular potential, Vxy is equal to 0, where x is between 0 to a and y is between minus a by 2 to plus a by 2, and then infinity otherwise. So how you will go for this particular wave function? So obviously the energy eigenvalue will remain same. So there is not any problem for the energy eigenvalue. So energy eigenvalue Enx and Ny will remain same because width of the box is same. Nx square upon a square, Ny square upon b square, and that will be also a. So that is a, and that is pi square h cut square upon 2m a square. But what will be wave function? Can anybody tell me what is your wave function? What will be your wave function now? If I have this sort of potential, then what will be your wave function? So one part of the wave function will remain the same. Very good. So x part will remain same. So we can use the quantum number nx and ny. So x part will remain same. That is 2 upon a sine nx pi x upon a. And what about another part? The y part is very tricky.
So what about another part? It can be changing according to the value of n. Of y. n, very good. So it will be root under, very good. So root under 2 upon a, that value is equal to cos nx pi x by a, isn't it? And here, sorry, ny, not nx, ny pi by a, and this value is equal to, this will remain same, and it can be remain 2 upon a sin ny pi y upon a. But in this quantum number, the nx has always a same, nx has same thing, 1, 2, 3, 4, 5. But here, what is value of ny? If you have cos function, then what is value of ny? That is 1, 3, 5, and so on. If you have sine function, the ny is equal to 2, 4, 6, and so on. So, because you have to also see the parity part. So, we have to see the parity part for x separately. We have to see the parity part for y separately. And then we have to go for this. Because boundary condition is very important. You have to write only those wave function which is just going to satisfy your boundary condition. Are you getting my point? Because if you will take sine 2 pi y by a, sorry, cos 2 pi y by a, it is not going to satisfy boundary condition. If you are going to take sine pi x by a, then it is also not going to satisfy boundary condition. So whenever you are going to the particle in box type of thing, you have to always try to write those wave function which is actually going to satisfy first boundary condition and then the parity of a system. So this is very interesting और इस तरह के questions आपके एग्जाम में आ सकते हैं. Okay, so this is very interesting. So one question. बोलो. Sir, in the energy eigenvalue, do we also have a square in the denominator? a square, that will be a square in the denominator. No, sir. तो यहाँ पर यहाँ नहीं. Multiplying. यहाँ नहीं होगा. Okay, yes, thank you. यहाँ नहीं होगा. Good, very good. Okay, so this is your whole thing. You have to work very nicely. And another thing, you have to go for what? Degeneracy. Okay, so you have to practice about the degeneracy of each and every system, whether it is B is equal to A or B is not equal to A, when the accidental degeneracy will come into picture and when the normal degeneracy will come into picture. And at this point of time, you can also include the concept of identical particle, whatever you have learned into statistical mechanics. So what you will do, you will just introduce the, suppose 8 fermion, 10 fermion, then what will be energy eigenvalue for the ground state? What will be energy eigenvalue for the first excited state? So how you can use the concept of Pauli exclusion principle. And you have learned all this thing in your statistical mechanics in a very nice way. So you have to just go for how you can go for Pauli exclusion principle. Okay, so this is very, very interesting. So in one particular energy level, there is only, so how many fermions are there? One particular quantum state, how many fermions are there? Only one fermions are there. I am talking about quantum state. I am not talking about energy state. What is meaning of quantum state? The meaning of quantum state is all possible information you are writing in form of quantum mechanics. Okay, so you have to just, and another thing is all, at least one quantum number should be different for each and every fermions. This is another way to write the Pauli exclusion principle. So it is very fair chance that they will ask the question in 2-dimensional box, in 3-dimensional box, for, and as well as in 2-dimensional harmonic oscillator and 3-dimensional harmonic oscillator for Pauli exclusion principle. So please beware and take care of this thing very nicely. Okay. And similarly, you can go for 3-dimensional box. So we have 3-dimensional box. We have this particular energy, nx, ny, nz. That value is nx square upon a square, ny square upon b square, nz square upon c square, and you have pi square
h cut square upon 2m. And obviously, I have for this potential, I have Vxyz is equal to 0 if x is between 0 to a, y is between 0 to b, and z is between 0 to c. And accordingly, you can write the wave function in this form. Okay, so you have your wave function as 2 by a. Sorry, यहाँ पर b है ना, मैंने गलत कर दिया है. This will be not there, and this will be b here. Sorry. Pi square h cut square 2m and b here, क्योंकि यहाँ पर y is between 0 to b. So this is the thing. Please make it correct. Okay. Please make it correct. Y is between 0 to b. What will be this value? Sine nx pi x by a root by 2 by b sine ny pi y upon b. And then you can also go for root 2 by c sine nz pi z by c. Please correct it. यहाँ पर b होगा, है ना? So you can just go for this and you can treat each and every wave function independently. आप इसको क्या कर सकते हो? Each and every wave function को independently choose कर सकते हो. Okay? So I am not going to very unnecessary that I am not wasting the time unnecessary. So let's try to go for 2-dimensional and 3-dimensional harmonic oscillator little bit, and always also prepare for your this particular thing, cube part, particle in a cube. And at least you have to work out for first 5 level for particle in a cube. Okay, ground state, first excited state, second excited state, third excited state, fourth and fifth level. Up to fifth level तक आप जरूर वर्कआउट करो, क्योंकि फिफ्थ लेवल तक के क्वेश्चंस मेनली जैम के एग्जाम में भी आ चुके हैं. सो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं. एंड ऑलवेज गो फॉर डिजेनरेसी. इसमें क्वेश्चंस किस तरह आएंगे? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी रहेगी, उसके टर्म में आपको हायर स्टेट की एनर्जी लिखने होंगे. सो यू हैव टू यूज पैरामीटर इन अ वेरी nice form. So let's go for 2-dimensional and 3-dimensional harmonic oscillator. Then we will go for our main thing, that is angular momentum algebra and spin. So इस पार्ट में आपको डिजेनरेसी को बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करना है. And what is your 2-dimensional harmonic oscillator? So you have Vxy is equal to half m omega x square plus half m omega y square. And what will be your energy eigenvalue? The energy eigenvalue is nx. So this can be written as E nx ny, that is n plus half or nx plus half h cut omega x plus what will be this value? Ny plus half h cut omega y. And you have to, your wave function is basically your psi nx ny is number kit for x as well as number kit for y. So I am not going in a unnecessary writing all this thing. Now you have to prepare for isotropic thing. Omega x is equal to omega y is equal to omega. Then what will be your energy eigenvalue? You can write it in form of n. है ना? So the energy eigenvalue for 2 dimension is n plus 1 h cut omega. And you have to also try to remember that n is nothing but nx plus ny. Okay. And what is value of n? N will go from 0, 1 to 3. And what is value of nx? That will also go to 0, 1 to 3. And what is value of ny? That will also go to 0, 1 to 3.
Okay. So this is your quantum number. So here you have also nx is equal to 0, 1, 2, 3, and y is equal to 0, 1, 2, 3. Now, suppose we know all these things, and let me give you one particular example. Suppose I have Vxy is equal to half m omega square x square plus y square, where x is between minus infinity to plus infinity, y is between 0 to infinity, and infinity otherwise. Or you can write x is less than 0, sorry, y is less than 0, you have infinity. So now, what will be your energy eigenvalue in this case? कोई बता सकते हो what will be your energy eigenvalue? x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है, y की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी में दिस पोटेंशियल, बट इन्फिनिटी इफ y इज लेस देन और इक्वल टू 0. So y की स्टेट में ऑड पैरिटी वाले एनर्जी आइगन वैल्यूज ही ऐड अप होंगे. वेरी गुड. सो यहां पर आपके लिए क्या आ जाएगा? यू हैव E nx and ny, and that value is equal to nx plus half h cut omega, because दोनों के लिए ओमेगा सेम है, and here you have ny plus half h cut omega, but quantum number is very interesting. What is value of nx? nx की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0. Very good. So that is 0, 1, 2, 3, and so on. And what about ny? What about ny? 5. That value is 1, 3, 5, and so on. है ना? So you have to always prepare this type of problem. एक बार गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सो आपके नेट के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो whenever you are seeing the whole this particular concept of 2-dimensional, 3-dimensional, always try to see the boundary condition and always try to see in which region which type of potential is there. So this will be your answer. Okay. So, and what will be the degeneracy for nth state for isotropic harmonic oscillator? Gn की वैल्यू क्या होगी? n plus 1, है ना? For this one, not this one. ठीक है? So this will be your wave function. Clear है ये? Okay. So आप देखोगे किसी किसी में आपको डिजेनरेसी मिलेगी, किसी में डिजेनरेसी नहीं मिलेगी, और आप उस तरह से चीजों को इजिली चेक कर सकते हो. Okay. So you can have this sort of problem. And similarly, you have to go for 3-dimensional harmonic oscillator. So when you have 3-dimensional harmonic oscillator, then this will be half m omega z square, Then you have nz plus half h cut omega z, and nz is equal to 0, 1, 2, 3, and you have another wave function nz. Okay. So you can prepare all this thing, but what will happen when omega x is equal to omega y is equal to omega z is equal to omega? चीजें कैसे चेंज हो जाएगी? Then what will happen to your energy eigenvalue? That is n plus 3 by 2 h cut omega, and where n will also go for 0, 1, 2, 3. And what will be degeneracy? आपकी degeneracy क्या होगी? Half into n plus 1 and n plus 2. Very good. Degeneracy is equal to half n plus 1 into n plus 2. And again, इस तरह के प्रॉब्लम में आप जरूर ये देखना कि किस तरह से आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो और कैसे उसे सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, लेट्स गो फॉर वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इफ 20 spin half electron is placed in
three-dimensional isotropic, three-dimensional isotropic harmonic oscillator, then find the ground state energy. Find the ground state energy. So this is very interesting. कैसे आप इसे करोगे? Just do it. So अगर आपको 20 spin half electrons को लाना है, तो पहले आप क्या करोगे? You will write all of your energy level. है ना? You have to write all of your energy level. So what is your energy level? So you have first level is what? 3/2 h cut omega, and this can be split into two part. That is, for one is plus and another is minus, or plus half or minus half. Another level is 5/2 h cut omega, and this will be how? What will be degeneracy of this one? Triply degenerate, है ना? So this will be triply degenerate, and further it is just going to split in plus and minus, and that will be a split in plus and minus, that will be split in plus and minus. And what about next level? 7/2. 7/2 h cut omega. What will be degeneracy for this level? 6. Six-fold degeneracy. So if you have six-fold degeneracy, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and all, and this is without a spin. Now, if you are going to contribute the spin, then every level is break into how many part? 2 part, है ना? Isn't it? So हर एक लेवल को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, because you have another quantum number, that is your spin quantum number. So you can go for something like this. So you can go for again plus minus, 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 again plus minus. Okay, and now you can see in each and every quantum state. So this is quantum state, this is energy state. This is quantum state, this is energy state. So each and every quantum state, how many electron can be there? Only one electron can be there. So there is 1, 1, 1, 1, 1, 1. So what will happen? In this level, you have 2 electron. In this level, in this energy level, you have 6 electron. And in this energy level, how many electron you can adjust maximum number? 12. 12. So what will be your energy? So you have 12 plus 8 is 20. So you have 2 into 3/2 h cut omega plus 6 into 5/2 h cut omega plus 12 into 7/2 h cut omega, and you can easily calculate this thing. So this type of problem will always come into your exam, and you have to very much prepare. अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक का मास m दे दिया था, दूसरे का मास 4m दे दिया था, एंड दे आर स्पिन हाफ पार्टिकल, and this is your, let's say, a spin 3/2. Then how you will go for this? How you will go for this? Just tell me how you will go for this. So can you repeat the question? I am saying that there are two type of fermions. One has a mass m with a spin half. Another have form of mass 4m with a spin 3/2. Then how they are going to adjust in each and every level? Suppose ground state में हमें adjust करना है, तो कितने level हो सकते हैं m के लिए और कितने 4m के लिए हो सकता है? और एनर्जी क्या हो जाएगी? m की क्या एनर्जी होगी, 4m की क्या एनर्जी होगी? Because you have two different mass. Are you getting my point?
सो m के होने से क्या चेंज होगा? Just tell me what is going to happen when you are just going to change m. So m के चेंज होने से आपके ओमेगा चेंज होंगे, है ना? ओमेगा इज नथिंग बट k अपॉन m. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक का ओमेगा 1 हो जाएगा और दूसरे का ओमेगा 2 k अपॉन 4m. सो यू हैव टू हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है तो दूसरे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? ओमेगा बाई 2. आर गेटिंग माई पॉइंट? सो आप एक nx लिख सकते हो, एक ny लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो n1 प्लस हाफ h कट ओमेगा प्लस n2 प्लस हाफ h cut omega by 2. So this is your energy eigenvalue because your mass is going to change. And now, अब आप यहां पर m वाले को सेपरेट ट्रीट करोगे, 4m को सेपरेट, बिकॉज दे आर डिस्टिंग्विशिबल. सो ये डिस्टिंग्विशिबल भी हैं और आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे. सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का m वाला सेपरेटली फॉलो करेगा और 4m वाला सेपरेटली फॉलो करेगा. सो अगर आप देखोगे ग्राउंड, अगर आप किसी लेवल में देखोगे, देन m वाले दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते, या दो ही फर्मियॉन्स हो सकते हैं, और 4m वाले कितने फर्मियॉन्स हो सकते हैं? उसमें 4 जा सकते हैं. सपोज यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एनर्जी आइगन, दिस पर्टिकुलर स्टेट. सपोज मैं n की वैल्यू 0 और n1 की वैल्यू 0 और n2 की वैल्यू 0 ले रहा हूं. तो देयर इज वन एनर्जी आइगन वैल्यू और वन एनर्जी आइगन स्टेट, और इसमें m वाले कितने हो सकते हैं? जस्ट टेल मी. 2 हो सकते हैं. ओके, इसमें m वाले 2 हो सकते हैं और 4m वाले कितने हो सकते हैं? बताइए. 4 हो सकते हैं. 4 हो सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो आप किस तरह से डिस्टिंग्विशिबिलिटी को लेकर आते हो, किस तरह से आप इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी को लेकर आते हो, किस तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को लेकर आते हो, एवरीथिंग यू हैव टू वर्क वेरी नाइसली. सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन. नाउ इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक जेस्ट और टीएफआर में बहुत आ चुके हैं बट नेट में नहीं आया है. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे. सपोज योर पोटेंशियल इज half m or something this type, half k x1 square plus half k x2 square plus half x1 k x1 x2 और k टाइम x1 x2 और 2 k x1 x2. इस तरह से हमारा पोटेंशियल है. एंड यू हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंटरेक्टिंग विद दिस पोटेंशियल. x1 और x2 के फॉर्म में आपने लिखा है. देन हाउ यू विल गोइंग टू एंटरटेन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? कैसे करोगे इसे? एनीवन? How you are going to entertain this type of problem? Normal frequency. Very good. So what you will do, you will just calculate the normal frequency from classical mechanics. Classical mechanics में सिखाया है ना, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी से आप यहां पर क्या करोगे? ओमेगा 1 की वैल्यू लिखो, ओमेगा 2 की वैल्यू लिखो, एंड देन यू विल गो फॉर n1 प्लस हाफ h कट ओमेगा 1 प्लस n2 प्लस हाफ h कट ओमेगा 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बाय द वे, अगर एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 0 आ जाए तो क्या होगा? Then what will happen? So it would the oscillation will remain in only one direction. Then that energy level, suppose n1 की वैल्यू 0 आ जाए, सॉरी ओमेगा 1 की वैल्यू 0 आ जाए, then you have 2 degree of freedom.
ऐसा भी तो होता है, कई जगह पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 0 आती है, आपने किया होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में। देन आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So it can be said that it's only translating in that. Okay, that is only translating into for that particular omega is equal to 0. But what will be quantum mechanical energy for that? Zero. Zero quantum mechanical energy. How do you know? This is not zero. Rather, this is just moving as a freely in a translation motion. So free particle के जो energy होंगे वो लिखोगे. What is free particle energy? H cut square k square by 2m, isn't it? Are you getting my point? भाई उसमें linear momentum तो है ही, पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है। Are you getting this thing? So जब पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है, then obviously you can go for just assuming that in for one particular mode it is just for a free particle, the another is harmonic oscillator. ठीक है, अगर मान लो दोनों नॉर्मल मोड सेम आ गए तो what will happen if both Isotropic in nature. isotropic in nature? That means you will go for two-dimensional or three-dimensional harmonic oscillator, depends on situation. ठीक है, okay. Now straightforward, let's go for angular momentum algebra, and then we will just try to go for spin part of your this particular revision. Okay. So angular momentum algebra में आपको जहां पर फोकस करना है, obviously the basic thing you have to always remember. So L square Lm is equal to L into L plus 1 h cut square Lm, Lz Lm is equal to m h cut Lm, बट यहां पर आपको हेल्प करेगा दो ऑपरेटर, वन इज L प्लस दैट इज Lx प्लस ILy, अनदर इज L माइनस Lx माइनस ILy. सो यहां से आप Lx की वैल्यू लिख सकते हो L plus L minus by 2 and Ly is equal to L plus minus L minus by 2i. And you all know the basic property of L plus and L minus. So L plus will operate on Lm. You will give this thing is L plus 1 minus m plus 1 h cut, and you will go for L m plus 1 for the given value of L, and L minus Lm you can have exactly L plus 1 minus m minus 1 h cut, L m minus 1. So these all things are very trivial and very simple. आपको ये सब पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो फोकस करना है वो फोकस कहां करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो आपको L डॉट n कैप की प्रॉपर्टी के बारे में। So what will be the eigenvalue of L dot n cap, where n cap is some arbitrary vector in your some arbitrary unit vector. So what will be L dot n cap? What will be the eigenvalue of this? What will be eigenvalue of this? बताइए, क्लास में किया है हम लोगों ने। What will be eigenvalue of L dot n cap? Anyone? 2H cross. 2H cross. How do you know where 2H cross? That value is equal to this eigenvalue will exactly same eigenvalue
of LZ for L is equal to 1. तो LZ की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1 h cat, 0 and minus h cat. So that will be also the eigenvalue for L dot n cap is 1 h cat, 0 h cat and minus 1 h cat. So you have to always take care of this thing. And also you have to prepare matrix form of L dot n cap for at least L is equal to 1. Okay. And you have to also focus on the concept of space quantization. And what will be space quantization? You know that cos theta is given by, and this theta is quantized, and that is given by ml upon root under L into L plus 1. So you remember all this thing. है ना? करवाया था ना problem? So this is your theta, this is your z direction, and this is your L vector. Okay. And similarly, you have x, y, z, and this kind of thing. So this is 1 h cat, 0 h cat, minus 1 h cat. So you can have this cos theta की वैल्यू. इसके ऊपर भी problems आपके एग्जाम में आते हैं. But the most important problems are mainly they will give your function psi theta phi as a function of theta and phi, and this can be written as some function of cos theta and e to the power im phi. So this type of function is very favorite for your net examination, and they will ask you that whether what will be value of m, what if Lz is measured, what is going to happen, if Lx is if L square is measured, what is going to happen, and then all these things. So when you will see the measurement of Lz, which point you will just focus on? Lz के लिए किसे देखोगे? Lz के लिए किसे देखोगे? M को देखोगे. So you will always see e to the power im phi. So that value is equal to m h cat if here is m. और L square के लिए किसे देखोगे? L तो यहां पर नहीं रहेगा, cos theta के टर्म में रहेगी चीजें. L square के लिए L is quantum number, but you have to see which function basically for L square. बताइए किस फंक्शन को देखोगे? cos theta के फंक्शन को in form of legendary polynomial. Are you getting my point? कि आप उसको किसकी बेसिस में लिखोगे? आप उसे लेजेंडरी पॉलिनोमियल की बेसिस में लिखोगे. So you have to at least remember 3 legendary polynomial, है ना? What is your value of p naught cos theta? बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. And what is value of p1 cos theta? Cos theta. Very good. And what is value of p2 cos theta? किए हो, बहुत जगह किए हो. half into 3 cos square theta minus 1. Very good. P2 cos theta is equal to half. This is 3 cos square theta minus 1. Are you getting my point? So suppose आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरह से. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. And what is your spherical harmonics? What is your spherical harmonics? YLM theta phi क्या है? बताइए. That value is basically PL cos theta and YLM and e to the power im phi. ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे. और अपने वेव फंक्शन को always write your psi theta phi as a Cn or some CLM, and you will write YLM theta phi.
तो इस फॉर्म में आप अपने वेव फंक्शन को हमेशा लिखने की कोशिश करोगे, एंड देन यू कैन इजिली यूज योर पोस्टुलेट्स। तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। एंड सपोज आपके एग्जाम में पूछ दे साई थीटा फाई इज सम कांस्टेंट ए cos square theta e to the power I phi. Suppose this is your question into exam. Now, what will be associated value of L and what is associated value of M? यहाँ L और M की क्या क्या associated value है, जरा बता सकते हो? M is 1. वेरी गुड। सो पहले तो आप M की बात कर ले रहे हो, M is equal to 1. गुड। व्हाट इज L? बताइए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज L? 2 and 0. वेरी गुड। सो दैट वैल्यू इज 2 and 0. व्हाई? बिकॉज आपको cos स्क्वायर थीटा को किसके फॉर्म में लिखना होगा? लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में। सो व्हाट इज योर cos स्क्वायर थीटा? You can write your cos square theta as 2 times P2 cos theta minus 1 by 3. And this one can be written as P0 cos theta. This is very interesting. And now you can put it here, और उसके बाद आप चीजों को देख सकते हो। That value is equal to A and some, let's say some constant C1, बाकी सबको constant में लेकर आते हैं, that is P2 cos theta e to the power I phi minus some C2 P1 cos theta e to the power I phi. So if you are going to measure LZ, then that value is M is equal to 1. But if you are going to measure L square, then that value is L is equal to 0 as well as L is equal to 2. So for L is equal to 0, that means 0 h cut square. For L is equal to 2, you have 6 h cut square. So here you have to be very much careful about this function. ये तो आप बहुत इजीली बात कर लेते हो, लेकिन ये फंक्शन भी सपोज ऐसा रहता cos 2 phi, then what is going to happen? Cos square theta and cos 2 phi. Then what is suitable value of L and M? M will be 2 and minus 2. cos 2 phi रहता। हाँ, फिर e to the power I2 phi minus e to the power plus e to the power minus I2 phi by 2. बाय द वे, ये आप बता सकते हो कि इस तरह का वेव फंक्शन हो सकता क्या? जैसे अगर मैं इस तरह से अगर लिखूं, जस्ट लुक एट हियर, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर मैं इस तरह से लिखूं वेव फंक्शन को, चलो एल और एम की तो आपने सेपरेटली बता दिया, लेकिन क्या इस तरह का वेव फंक्शन हो सकता क्या? तो आपने क्या लिखा? P2 cos theta e to the power I phi माइनस P0 cos theta e to the power I phi. क्या पॉसिबल है क्या? पहले तो L और M को आपने चेक कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इस तरह का वेव फंक्शन पॉसिबल है? जस्ट टेल मी। हो सकता है कि एक ऑप्शन आपके पास ये रहे कि दिस वेव फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है या नहीं, बताओ। देखो यहां पर, हाँ, यहां पर L की वैल्यू 2 है और M की वैल्यू 1 है, इट्स ओके। लेकिन यहां पर M की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 0 है। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज M की वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए? योर M मस्ट बी बिटवीन माइनस L टू प्लस L. सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर ऑल द थिंग। तो ये वेव फंक्शन ही इस तरह से पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
क्योंकि जब भी वेव फंक्शन पॉसिबल रहेगा तो ये कंडीशन आपके हमेशा होल्ड करने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है पी नॉट कॉस थीटा ई टू द पावर आई फाई हो। अगर पी नॉट कॉस थीटा है तो उसके साथ कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू हैव टू ऑल्सो वर्क फॉर द बाउंड्री कंडीशन, है ना। और ये आप हमेशा ध्यान में रखो। एंड जब प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी अगर सेम क्वांटम नंबर है तो उनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऑलवेज ऐड हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं और आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑलवेज एम की वैल्यू डिनोट करने से पहले ये देखो कि उसके साथ कौन सा एल वाला पार्ट है। अगर एल वाला पार्ट और एम का के बीच में इस तरह की रिलेशनशिप नहीं होती है, देन ऑब्वियसली इट इज वेरी tough job to then it is impossible that this type of wave function is there. Okay, so this wave function e to the power I phi is not possible. So you have to always prepare this type of problem. Okay, अच्छा ये बताओ, ये पॉसिबल है cos स्क्वायर थीटा? ये पॉसिबल है? यहां पर m की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी? M0, m की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 2 and 0. 2 and 0। क्या ये पॉसिबल है? Yes, sir. यस, दिस इज पॉसिबल बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो और L इज इक्वल टू 2 होने पर भी m की वैल्यू 0 हो सकती है और L इज इक्वल टू 0 होने पर भी m की वैल्यू हो सकती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। ओके, Excuse me, sir. हाँ बताओ। As we've written cos square theta, हम्म, along that you once mentioned cos 2 phi. So अगर when ऐसा you कोई think दे of दे cos 2 आपको, phi, सॉरी आप क्या बोल रहे हो? cos कॉस square स्क्वायर theta, थीटा cos 2 phi. ये पॉसिबल है या नहीं है? So we need to check for the 2 phi, na? The 2 value फाइव of तो that 2 फाइव से कुछ नहीं चेक करना आपको, जो भी चेक करोगे इससे चेक करोगे। इसको आप किसके किसके फॉर्म में लिखते हो P2, बताओ? P0. P2 cos theta एंड प्लस P1 सॉरी P0 cos थीटा, है ना। सो cos 2 फाइव को क्या लिखोगे? e टू द पावर i2 फाइव प्लस e टू द पावर माइनस i2 फाइव। सो P2 के लिए तो ये सही है, दोनों ही सही है, ओके। बट P0 के लिए क्या है? दोनों ही पॉसिबल नहीं है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. तो P2 के लिए तो दोनों ही सही है, आप इस तरह लिख सकते हो cos स्क्वायर, सो यू कैन राइट P2 cos थीटा e टू द पावर 2i फाइव लिख सकते हो। लेकिन P नॉट cos थीटा e टू द पावर 2i फाइव इज नॉट पॉसिबल, सो यू कैन नॉट राइट दिस थिंग। ओके, तो ये आपको नहीं लिखने की जरूरत है। सो एंड अगेन वन थिंग यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर, एटलीस्ट LX LY LZ ऑपरेटर को, LX LY LZ ऑपरेटर फॉर L इज इक्वल टू 1 के लिए आप जरूर प्रिपेयर करो। LX LY LZ ऑपरेटर फॉर L इज इक्वल टू 1 इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, और उसके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन जरूर निकाल कर रखो, इसका यूज हो सकता है। बाय द वे, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ LX LY LZ फॉर L इज इक्वल टू 1? What is eigenvalue of Lx, Ly, Lz for L is equal to 1? Lz का आइगन वैल्यू क्या होगा ये बता दो। H cross 0 minus H वेरी cross. गुड, h कट 0 माइनस h कट, ठीक है। एंड व्हाट विल बी Lx, आइगन वैल्यू ऑफ Lx? क्या Lx को ऐसे लिख सकते हो?
L dot I cap लिख सकते हैं या नहीं? Is that Lx is L dot I cap? Are you able to write this thing or not? Yes. Yes. So इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया ना, L dot n cap. Agreed? So what will be eigenvalue of this? Again, h cut 0 minus h cut, है ना? So ये आप हमेशा ही ध्यान में रखोगे कि L dot n cap की आइगन वैल्यू हमेशा किसके फॉर्म में रहेगी? जो आइगन वैल्यू आपका LZ का होगा एग्जैक्टली वही आइगन वैल्यू, डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है इन जनरल, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग द R पार्ट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थीटा पार्ट एंड फाई पार्ट. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर. L dot n cap की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोटेशनल मैट्रिक्स. सपोज किसी भी, suppose you are just rotating a system with angle theta with some n cap direction. So what will be that matrix? What will be that matrix? बताइए. cos theta minus sin theta. हाँ? Rotation. I am writing the rotational matrix in a quantum mechanical form. Which operator you are just going to use here? E to the power minus I into E theta to the dot power minus I. So what you will Into- write? into theta dot j cap j vector divided by h cross. So that value is equal to, you have theta dot j by h cap. सब आर्बिट्री डायरेक्शन थीटा के डायरेक्शन में लिख रहे हो. इसको आप कैसे लिखोगे? दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस, अभी आप l लिख सकते हो. आई एम यूजिंग l वेक्टर. ओके, सो हाउ यू विल राइट दिस थिंग? यू विल राइट दिस थिंग एज, इसको आप किससे डिवाइड कर दो? मॉड थीटा से, and you can multiply it by mod theta. So theta by mod theta is what? Unit vector. So you have minus I mod theta n cap dot L upon h cap. So this is your rotational matrix you can use here. Are you getting my point? और n cap कोई भी एक आर्बिट्री वेक्टर हो सकता है. अगर ये x के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? x. और ओनली कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा? ये Lx. एंड व्हाई दिस माइनस साइन? फॉर काउंटर क्लॉकवाइज. सो यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कि आप Ly के अबाउट थीटा एंगल को रोटेट कर रहे हो, है ना? कोई भी स्टेट है उसे आप Ly के अबाउट थीटा एंगल पर रोटेट कर रहे हो. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सो ये L किस में चला जाएगा? चेंज y एक्सिस. सो दैट विल बी Ly. सपोज योर केट इज 100 केट. सपोज इस केट को है, और इस केट को आप क्या कर रहे हो? रोटेट अबाउट y axis, rotate about y axis with angle 60 degree. So how you will write this thing? बताइए कैसे लिखोगे इसको? So this value is e to the power minus I. इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 60. And this value is equal to what? Ly upon h cut. N cap dot L is remain Ly by h cut. And now you can open it in cos and sin form. और Ly फिर आपको किस फॉर्म में आ जाएगा? L plus and L minus के फॉर्म में. आप चाहो तो इसे इजिली फिर टेलर एक्सपेंशन कर सकते हो और बाकी चीज कर सकते हो, डिपेंड ऑन सिचुएशन. बट दिस इज योर रोटेशनल मैट्रिक्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसको किसके ऊपर ऑपरेट करोगे? यू विल ऑपरेट इट ऑन 100. So this will be in a matrix form. ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बनेगा? ये बताइए. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट L is equal to 1.
तो कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना? सो एंड आई पार्ट इज देयर, सो कॉस और साइन पार्ट अपने आप आ जाएगा और वो इसके ऊपर ऑपरेट करके एक नया वेक्टर देगा और आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये आपके एग्जाम में खूब आते हैं और आपको इसे प्रिपेयर करना है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी interesting thing you have to prepare. I will also give you one reading material about this, so आप इसे देख पाओगे। Okay, and what will be degeneracy for given value of L? What will be degeneracy? अगर L की वैल्यू फिक्स है तो what is your degeneracy? बताइए। 12 plus 12 1. plus 1. So your degeneracy is 12 plus 1. So this is your orbital angular momentum, और इसी का जस्ट आप देखोगे एग्जैक्ट सेम थिंग हम स्पिन के बारे में बात करेंगे, एंड वी कैन गो फॉर हाइड्रोजन एटम, ऑल दिस थिंग। बट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर, एंड टुमारो वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के रिवीजन को फिनिश करेंगे। ओके, बिकॉज इन द अप्रोक्सीमेशन मेथड यू हैव टू ओनली डू प्रैक्टिस, उसमें बहुत कुछ करने के लिए है नहीं। आई विल जस्ट गिव यू विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू प्रैक्टिस, बट मेनली टुमारो वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश इट, क्योंकि इसी का यूज वहां पर आपको मिलेगा, है ना? सो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग। और कल जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था वो आप लोगों ने कर लिया, सच दैट आई कैन सेंड यू सॉल्यूशन ऑल्सो? ट्राई किया उसे? यस सर। हाँ, ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इसे फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।